Hello, dear children. I hope all of you are fine and very happy and safe at your home. This is your first chapter, second part, that is an approach towards the past. So in this slide, we are going to discuss about geographical impact and the physical features of India. First of all, you should know that what is geography. Geography, it is a field of study in which we study land, its features, inhabitants, and phenomenon of Earth and planets. So we can say that in geography, we used to understand the earth and its humor and natural complexities. That we used to study rivers, plateaus, mountains, whichever whatever is present on our earth. So in geography, we used to study that. But geography of the India played a very important role in uh, in creating its history, I must say, because geographical features of India has great impact on the peoples of India. And even as I told you that even the word India was came from the Greek and Iranian period, when they used to call river Indus as Hindus or Indus. मतलब या तो हिंदूज बोलते थे HINDOS या इंडोज बोलते थे INDOS. So the land to the east of this river, अब इस river Indus river, look at this Indus river के east में यानी जम्मू कश्मीर वाली side, they used to call this area as India. I hope you understood the point. So this is river Indus. जब ग्रीक ईरान के लोग जो थे, they used to call this area which is in the east of the Indus river, they used to call this area as India. So there are various physical features of India, which includes Great Himalayas, Northern Plains, Deccan Plateau, and coastal plains. Dear students, you should have your map along with you because you have to fill all these details in your map. Okay, first we are going to discuss about Great Himalayas. So Great Himalayas, these are these lies in the north of India. That from this yellow part, this includes your Himalayas, which included the area of Jammu and Kashmir, Punjab, uh, uh, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Then it passes through the Nepal area, and in India it passes through Sikkim, then Arunachal Pradesh. So these are the areas from where this the Himalayan range passes through. So mark this all areas like this only. Just यहाँ पर एक पेंसिल से पूरा ये ड्रॉ कर लो and write this as Himalayas. Then they are very high and act as a natural barrier. So ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, and it during ancient time, even present time too, it act as a natural barrier for invaders from the north. Nobody can enter to India from this area because these are the mountains which act as a barrier, जो किसी को enter नहीं करने दे सकती यहाँ पे, because ये पहाड़ियाँ जो है वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं. Next feature what we are having, that is northern plain. So all of you just shade this area of थोड़ा सा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, somehow Assam, and somehow Meghalaya too. So mark all this area, shade all this area, and write this area as northern plain. Okay, this is northern plain of the northern plain area. So
These are the places along with the river, and they have developed faster than any other part of India. So actually, river is the main source of travel here. We have seen in the first slide that there are a lot of river coming here, that from this area, Indus River, which has many tributaries like Jhelum, Chinha, Bravi, Beas, and there is also Satluj. And from Uttarakhand, near Gangotri Glacier, from where Ganga originates. Then Ganga has its various tributaries in which Yamuna originates. So lot of rivers. You can check the first slide. You will see that lot of rivers are there, and you have to write all these rivers on your map too. ठीक है. So they provided important source of water and made these areas most fertile. It is because of these river water, क्योंकि river water अपने साथ बहुत सारे sediments को लेके आती है, जो किनारे किनारे पे छोड़ती है और न्यू एलोवेल सॉइल बनती है. और इस एलोवेल सॉइल को बनने में 1 2 या 10 या 15 साल का टाइम नहीं लगता. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर, और मिलियन ऑफ ईयर लगे थे. इस जगह सब कुछ इकट्ठा हुआ है. दैट इज वाई दिस एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया, जहाँ विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ओके, सो दैट इज़ वाई आप जितने भी एग्रीकल्चर देख लो, इन्हीं एरियाज़ में आपको बहुत सारा एग्रीकल्चर का मिलेगा. पंजाब के पीपल, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, दे पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. सो I think I cleared your point. Next feature which we are having is Deccan Plateau. Deccan has always been very strong and powerful military base. Even the mighty powers cannot even capture this area, and everybody wanted to. If you have seen various movies, they always wanted to control over this area, but they never did that. They were आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा किंग्स, बहुत सारे किंग्स ने दे अटैक्ड वेरियस टाइम टू कैप्चर दिस एरिया, लेकिन दे वाज नॉट लाइक दे कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. तो ये जो महाराष्ट्र का पार्ट है, दिस तेलंगाना, कर्नाटका, दिस ऑल एरिया इंक्लूड्स इनटू डेक्कन प्लेट्यू. आई थिंक यहाँ पे प्लेट्यू के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सो इसको प्लेट्यू के स्पेलिंग आप सही लिख दीजिएगा. PLATEAU, PLATEAU. ओके, आई थिंक दिस इज EL, आई थिंक आर है या ई आएगा यहाँ पे. PLATEAU. ओके, डेक्कन प्लेट्यू. और डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड पे वी हैव वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ये भी आप लोगों ऐसे ही पूरी लाइन सी लगा के, जैसे ईस्टर्न घाट्स लिखे हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स लिखे हैं, ये अपने मैप पर लिख लीजिएगा. ओके, सो mark this Deccan Plateau area and Western Ghats and Eastern Ghats. Okay. Next physical feature which we are having is coastal plains. So this whole boundary from Gujarat, यहाँ से look at the left side man, from गुजरात से लेकर नीचे जाते हुए ऊपर पूरा वेस्ट बंगाल तक, जो ब्लैक लाइन है, दिस शोज द कोस्टल बाउंड्री. सो दिस आर द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया. अब कोस्टल बाउंड्री पे आपको कौन कौन से मार्क करने हैं, लाइक यू हैव टू मार्क दिस मालाबार कोस्ट एंड दिस कोरोमंडल कोस्ट. इट्स इनफ फॉर 6th क्लास एटलीस्ट, कि मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, ये दोनों मैप पे आप शो कर दीजिए. ठीक है, दिस इंडिया का, दिस इज योर कोस्टल एरिया. I hope I am clear. So coastal area, coastal plains of India, this is also one of the most important source. Various European, Southeast Asian, even African countries people used to enter enter India with
from these coast areas only. And uh, the first Muslim and Christian trader reached Kerala by the sea. So various people who came to India, they was having the source to enter into India by seas only, क्योंकि उस वक्त पे कोई जहाज नहीं थे, कोई बसेस नहीं चलती थी, या कोई हमारे पास सोर्सेज कुछ बड़े नहीं थे. वी वॉज हैविंग ओनली सी रूट हुआ करता था, सी के थ्रू, शिप्स के थ्रू लोग आया करते थे. सो दे यूज टू कम इंडिया फ्रॉम दिस सी रूट ओनली. सो बहुत सारे लोग जो है इंडिया में सी रूट के थ्रू आए थे. सो दिस इज़ योर कोस्टल लाइन. आई होप आपको कोस्टल लाइन या कोस्टल प्लेन्स जो है वो भी क्लियर हो गया होगा. This is the final topic of this chapter, the concept of dates in history. Before studying this concept, just see this timeline below. 3000, then 2500, 2000, 1500, then 1000, 500, then 1. उल्टी गिनती आ रही है ना, reverse counting. Why? Because this area is called as before common area. This area is called as before common area. और before common area किसको बोला जाता है? वो area जो जीसस के बर्थ से पहले का टाइम है, that is called as बिफोर कॉमन एरिया. एंड जीसस के बर्थ के बाद का जो टाइम है अप टू अभी तक, वो बिल्कुल सीधा सीधा जो काउंटिंग हम करते हैं वैसे 1 2, सो 1 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 1000 आएगा, 1500, 2000. नेक्स्ट ईयर जो है अभी जो है 2020 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इट विल बी 2021. ठीक है. सो आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज कॉमन एरा. This is called as common era because most of the countries of the world are now using this as uh, most of the countries are using this, that historians has divided this period, and they took that जीसस के बर्थ को उन्होंने ज़ीरो ईयर लिया है. सो वी टेक द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस एज ज़ीरो. और उससे पहले का जो पीरियड है, हिस्टोरियन सेज कि वो पीरियड है बिफोर कॉमन एरा, और जीसस के बर्थ का बाद का जो पीरियड है इट इज़ कॉमन एरा. सो आई होप इट इज़ क्लियर. ओके. So dear children, this was all about this chapter. I hope you liked the video, and thank you so much for watching.